Now I'm going to share my screen. Now, um, at um, at CPU socket, we have seen that it is of two types just because of connectivity. One is PGA and second is LGA. Okay, and Yes. at uh, at CPU socket, we place our processor, microprocessor. Over it, we place cover of CPU, and then cooling paste, then heatsink, then cooling fan. Okay. Now, just beside the CPU socket, there is a ATX power. Fine. Yes, sir. Yes. Now, in the beginning, we give power supply to the motherboard from SMPS with 12-pin power cable. With 12-pin power cable, हम मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देते थे कहां से? एसएमपीएस से। और Yes, sir. इसके लिए टोटल 12 पिन का पावर सॉकेट होता था हमारे मदरबोर्ड पे। बट ग्रेजुअली then motherboard required more power. So 12-pin power socket. So 12-pin power socket changed into 24-pin power socket. And this 24-pin power socket is known as ATX power. This power socket has 24-pin slot. After ATX power socket, one new motherboard was introduced in which there are 28-pin power socket. That is known as BTX. So initially, 12-pin power socket motherboard was known as AT motherboard or AT power. Second, ATX motherboard or ATX power. Third, BTX motherboard or BTX power. In AT, total 12-pin, ATX 24-pin, BTX 28-pin. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What is mean Now, of ATX? sorry? Sir, ATX का full form क्या होता है? Advanced technology extended. But good. Good. And BTX का होता है बैलेंस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड. फाइन? Yes. ओके. तो जब पावर की बात आती थी तो मदरबोर्ड का कैटेगराइजेशन हम पावर के बेसिस पे करते थे. लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलते हैं. अब हम मार्केट में कभी भी ये कहने को नहीं जाते हैं कि भैया मुझे को ATX दे दो या BTX दे दो. AT की तो बात करेंगे ही नहीं हम, क्योंकि पावर सप्लाई अब मदरबोर्ड का स्पेसिफिकेशन नहीं रहा. मदरबोर्ड का स्पेसिफिकेशन आ गया आपको आज की डेट में प्रोसेसर के ऊपर. ये मैंने लास्ट क्लास में भी बोला है. खैर, जब आप पावर सॉकेट के देखें
तो सिर्फ और सिर्फ पावर सॉकेट के बारे में समझ सकते हैं कि आपके मदरबोर्ड पे कौन सा पावर सॉकेट है, ATX है या BTX है। फाइन। नाउ अब देखिए, जस्ट इसके साइड में ये एक डी रैम स्लॉट है। आई थिंक नाम से सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डी रैम, व्हाट इज द यूज ऑफ डी रैम स्लॉट। Yes, sir. फाइन, so it is used to, Store data. no my dear friend, any slot cannot be used to store data. Slot can be used, Sir, memory को establish Inside the RAM. Yes, sir. RAM, Motherboard, sir, sir, depend RAM on को motherboard. establish करने के लिए लगाया। yes. Now this slot is used to connect RAM with motherboard. Yes, sir. Fine. And Yes, sir. RAM is the primary memory, simply because we will discuss separately about RAM. RAM is the primary memory of our computer, and Yes, sir. whenever we have, yes, whenever we have to give any data, we have to work on any data, we input data with any input device, all data from any resource, first of all placed into RAM, सबसे पहले RAM में डाला जाता है, then it goes to processor. अभी बीच में भी कुछ चीजें आती हैं, बट मान लो पहले RAM में, then वो प्रोसेसर के पास जाएगा, तो प्रोसेसर. Yes. That's why RAM performs a very vital role in our computer. To connect Yes, RAM with the motherboard, there are two types of slot. One slot is known as SIM, SIMM, and second slot is known as DIMM, DIMM. SIM stands for Single Inline Memory Module. DIMM stands for Dual Inline Memory Module. Okay? Single Inline Memory Module, Dual Inline Memory Module. Look. Suppose this is a RAM slot. I'm just drawing. And this is another RAM slot. If any RAM slot has single-sided pin, it is known as SIM, S-I-M-M. Fine. If it has double-sided pin, fine, then it is known as DIMM, D-I-M-M. Fine. Initially, RAM slot was SIM, and RAM has also one-sided pin. सिर्फ ये RAM है तो RAM की एक ही तरफ पिन है, इस साइड नहीं. तो as RAM has one-sided pin and slot has also one-sided pin, so we can connect these two components. Now in these days, RAM has both-sided pin. That's why our slot has also both-sided pin. So DDR1, 2, 3, any RAM is connected with DIMM slot. Fine. Any Because now, SIM and DIMM. sorry. So कोई रोहित, डिफरेंस है SIM और DIMM में इसके अलावा? हाँ बिल्कुल है ना. इसके अलावा ये तो एक्चुअली मैं स्लॉट ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए आपको स्लॉट के बारे में डिफरेंस बताऊंगा. Yes, sir. ये तो सिर्फ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है ना. Yes, sir. लेकिन इफ यू विल टॉक अबाउट द रैम,
Okay, sir. Actually, just see. Power socket, 24 pin means to give more power. 28 pin to give more power. Fine. RAM slot, SIM. So to connect all those RAMs which has single-sided pin. To connect all those RAMs, DIMM. To connect all those RAMs which has both-sided pin. But if we will talk about RAM, in that case, double-sided pin RAM is faster than the SIM RAM. Actually, SIM RAM is not a type; it is a slot type. स्पीड डबल हुआ तब तो DDR की बात आई। DDR का मतलब जानते हैं आप लोग? DDR सुनते हैं? DDR का मतलब नहीं पता इसमें। DDR मीन्स डबल डेटा रेट। प्रीवियस रैम के कंपैरिजन में जस्ट डबल, इसीलिए बोथ साइड पिन किया गया था। लेकिन अभी मैं इस पॉइंट पे नहीं बात कर रहा हूं बिकॉज कि मुझे तो सिर्फ स्लॉट के बारे में बताना है, मदरबोर्ड कंपोनेंट के बारे में। जब रैम में आएंगे तो स्पेसिफिकली हम लोग समझेंगे कि इस रैम की कितनी स्पीड और कितना इंक्रीज किया। ठीक है? ओके सर। यस सर। Fine. Now, at motherboard, mostly there are two slots to connect RAM. Two slots. You can connect your RAM with any slot. If you have two RAMs, you can connect these RAMs at both slots. Yes, sir. Suppose you have a desktop machine, you have a RAM 4 GB. Then now you want to increase the physical memory capacity of your machine. You can just buy one another RAM with 4 GB, 8 GB, any, and you can connect it at the another slot. Then your total RAM capacity of your machine will be, for example, you have purchased new RAM of 8 GB, and previously in your there is a RAM of 4 GB. Means total physical memory is now 12 GB. यस सर। Yes, sir. फाइन। कहते नहीं है, कभी कभी ऐसी बात आती है कि सर कैन बी increase the physical memory size? Yeah, definitely you can increase. ठीक है, स्लॉट फ्री होना चाहिए, आप इंक्रीज कर ले। अब मान लो आपने 4 ही GB रैम लगाया, लेकिन उसमें 2-2 GB के 2 रैम लगा दिए, तब तो आपको तो कोई एक रैम निकालना ही पड़ेगा, तभी उसके जगह पे उससे हायर कैपेसिटी वाला रैम आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है? यस सर। No. Yes, sir. Now we are coming to this point, IDE slot. Fine. IDE slot is also known as PATA slot. Actually, this slot is used to connect hard disk and CD DVD drive with the यस motherboard. सर। Fine. But this slot is used to connect all those hard disks and CD DVD drive which are PATA. 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 PATA यस means सर। parallel advanced technology attachment. Parallel advanced technology attachment. Fine. But now in these days, we are using SATA hard disk, SATA CD DVD drive, and now we have started to use SSD hard disk, NVMe hard disk. यस सर। But still, mostly you will see that people are using SATA hard disk. SATA means serial advanced technology attachment. Fine. So if we have PATA hard disk, then we will connect it with this slot, ID slot or PATA slot. Now I'm going to show you SATA slot also. Now this ID or PATA slot has theoretically 40 pins.
इसमें टोटल 40 पिन होते हैं. But if you will count it practically, then you will see it has only 39 pins. 39 pins. Fine. Yes, sir. Now it's कॉर्नर वाला एक नहीं होता. नहीं, कॉर्नर वाला नहीं, जस्ट मिडिल में एक नहीं होता है. ठीक है. Now in place of this port, now SATA port is used, SATA slot is used, and SATA slot has only 7 pins and it is very small in size. Fine. Now I'm going to show you these two things in a picture. Fine. I think this image is clear. See, you all can see this is the PATA slot. And now there is a continuation of pins, but there is no pin. There is no pin. Fine. That's why I have told it has 39 pins. Fine. Now, Yes, sir. Yes, sir. this is the RAM slot. Yes, And sir. now you all Yes, can sir. see both sided pin is available. Yes, sir. At this slot, we can connect DDR RAM. DDR, yes, sir. Fine. Okay. Now, I'm going to show you SATA. Now see, it's good. It's good. Fine. This is the SATA slot. Look here, SATA, SATA. Fine. Previously, you have seen PATA. Now this is SATA. And if you will count pins at this port, you will get 7 number. Means इसमें total 7 pin होते हैं. Fine. Total Yes, 7 pins. Now it is very small in size. But to connect different devices with the SATA slot, separate cable is used. For example, if you have 6 SATA slots on your motherboard, like here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then you can connect maximum 6 number of devices. Fine. For example, you have connected 4 hard disks, 1 CD DVD drive, and your 2 CD DVD drive. Means maximum 6 devices. If you have only 4 ports, 4 slots, then in that case only you can connect only 4 devices. Now, can we connect multiple devices with ID slot, PATA slot? Connect कर सकते हैं? Yes.
we can connect. See, this cable is also known as SATA cable. This is SATA cable. Fine. Now I am going Yes. to show you PATA cable. Fine. See, this is the PATA cable. This PATA cable is available into different size, but its width is always similar. Now, with this cable, you can connect maximum 2 devices, Yes, sir. because the one end will be connected to the motherboard, and these two ends can be connected to 2 different devices. Yes, sir. If you have two, yes, if you have 2 PATA slot on your motherboard, it means by using this cable, you can connect maximum 4 devices. Yes, sir. Fine. Now, see, this is also a cable. But with this cable, you can connect only one device. Yes, sir. Now, SATA cable. This is the SATA cable. SATA cable. Fine. See this. Fine. This cable has 2 ends. One will be connected to the motherboard and second will be connected to the device, hard disk or CD DVD drive. Yes. Yes. Fine. And now this picture is very clear. You can count the pin also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sir. Right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, I'm just going to show you the picture of hard disk. I'm not going to teach you about hard disk. I'm just going to show you picture of hard disk. PATA, PATA, HDD. Now see at this hard disk. This is the hard disk, and at this hard disk, again this is a PATA slot, and we all can see that it has also one less pin. Yes, sir. Yes, sir. Fine. So one end of the cable will be connected to this port. This is PATA port available at PATA hard disk. So as per the connectivity with the hard disk, now name is as a PATA hard disk, PATA slot, PATA cable, and it is also known as IDE. Fine. Now, SATA, SATA, SDDD. Now, actually, this picture is not very clear, but now here you all can see. Yes, sir. It has also 7 pin.
Yes, sir. So PATA cable will be connected here. No, sir. Okay. SATA, sir. SATA, sir. Yeah, SATA. Sorry, mistake. SATA. Good. Very good. So as per the port available at the motherboard, we should select cable and we should select devices. Yes, sir. Yes, Fine. sir. Fine. Yes, sir. Okay. Now, next component is North Bridge. What is the use of this North Bridge? Actually, this is a chip and this is chip. This chip is used to control the communication between RAM and processor. इस चिप का काम होता है कि रैम और प्रोसेसर के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उसको ये कंट्रोल करे। ठीक है। अब किस सेंस में कंट्रोल करे? वी ऑल नो कि प्रोसेसर प्रोसेसेस आवर डेटा, बट processor will process any data if we will supply if we will give it to the processor. So we can give data through multiple input devices. We can give some instruction to computer to process stored data, and that stored data can be at the hard disk, in our pen drive, in our floppy disk, CD DVD drive, CD DVD, at any storage media. Yes, But sir. अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि whenever a data has to be processed, जब भी किसी डेटा को प्रोसेस होना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we place the data into the RAM में डालते हैं और RAM से ये प्रोसेसर के पास जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगा कि दरअसल में RAM जिस स्पीड से डेटा ट्रांसफर करता है और प्रोसेसर जिस स्पीड से डेटा को प्रोसेस करता है, इसमें एक बहुत बड़ा गैप होता है। ठीक है। गैप कहने का मतलब कि रैम की स्पीड प्रोसेसर की स्पीड के कंपैरिजन में बहुत लो होती है। लो होने की वजह से प्रोसेसर और रैम के बीच में एक और मेमोरी डाली जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग कैश या कैच मेमोरी। कैश या कैच मेमोरी वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। खैर, कैश मेमोरी का काम होता है कि इसकी स्पीड रैम से ज्यादा बट प्रोसेसर से कम होती है। तो रैम और प्रोसेसर के बीच में जो ये डिफरेंस है, उस डिफरेंस को रिड्यूस करने के लिए बीच में कैश मेमोरी लगाई जाती है। तो कैश मेमोरी का काम होता है कि वो रैम से डेटा फेच करके ले आए, अपने पास रखे और वो फटाफट प्रोसेसर को दे, जिससे हमारे ओवरऑल सिस्टम का परफॉर्मेंस अच्छा हो। लेकिन रैम टू केस मेमोरी टू प्रोसेसर, इस में जो ट्रांसमिशन हो रहा है, डेटा का ट्रांसमिशन, इस ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे नॉर्थ ब्रिज की रिक्वायरमेंट होती है। फाइन। Yes, sir. अब ये नॉर्थ ब्रिज इन सारे ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता, तब हमारा प्रोसेसर स्मूथली सारी चीजें प्रोसेस करता है।
अब इसलिए ये भी एक चिप है अपने आप में, ये भी एक छोटा सा प्रोसेसर है. दैट्स व्हाई अ हीट सिंक इज रिक्वायर्ड ओवर इट. सो यहाँ पे देखो एक फिक्स्ड हीट सिंक है इसके ऊपर में. फाइन, ये हीट सिंक ही है ना लगा हुआ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी तक हमने जिन स्लॉट्स के बारे में, पावर सॉकेट, रैम स्लॉट, आईडी स्लॉट, साटा स्लॉट, पार्ट एंड नॉर्थ ब्रिज, इनके बारे में जो डिस्कशन किया, इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. ठीक है, ओके, गुड गुड. सो नाउ यू ऑल हैव गॉट मैसेज कि आपकी क्लास अब ऑफलाइन हो रही है. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए शेड्यूल वगैरह आज शाम तक आप लोग को मैसेज भी ग्रुप में दिया गया है कि शाम तक आ जाएंगे. Yes, देन sir. आगे हम लोग डिसाइड करेंगे कि फिर कैसे करना है ना, किस तरीके से क्या रूटीन Yes, आता है. sir. सर बट ऑनलाइन भी चलेगी ना? हाँ ऐसा भी होगा बिकॉज वो सब चीजें हम लोग भी फटाफट अभी मैनेज कर रहे हैं. ठीक है, यस सर. तो फिर धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी. चलिए फाइन, एक दो दिन में एवरीथिंग विल बी स्मूथ. सर ऑनलाइन Yes, sir. सॉरी, just give me 1 minute.